Hey guys, what's up? I had said in the last lecture that I won't be recording any more lectures for YouTube because I'm already teaching Act 2 on Zoom to my batches. But because a lot of you requested for a summary of Act 2, I'm not teaching it line wise, but I'll do the next best thing. I'll try and review the entire act sidewise for you. All right. So I'll cover all the important dialogues and I'll tell you what's happening in each scene. Also, I'm trying something different. I'm going to try and do this whole thing in one take so that you come to know what we teachers expect from you when it comes to reviewing the whole Merchant of Venice. All right, you should know the sequence of events in your head. So, Act 2. All right, so focus on what I'm saying. Act 2 begins with Prince of Morocco. All right, scene 1 ki baat kar raha hu main. Act 2, scene 1, first side, we are introduced to Prince of Morocco, who's a dark skinned person because he stays in Morocco, which is close to the sun. But he's very confident of his skin color and he's trying to tell Portia to not dislike him for his dark complexion. He says, this shadowed livery, this dark skin of mine is a result of the sun god, okay, near whom I'm brought up. So my place is located near the sun. Hence, I'm dark skinned. And I've scared the most valiant hearts with this skin color. And the most beautiful people, the most beautiful girls of my land, of my clime, have loved my skin color too. To which Portia says on that same side that in terms of choosing a husband, when it comes to choosing a husband, I'm not dependent on on just a person's view on what other women think about you. Okay. Besides, second side. Besides, my father has created this lottery, so I really don't have a choice. But if it was up to me, Monaco, for me, you're as fair skinned as anybody else. Okay. She's lying. Obviously, we know that Portia is a bit prejudiced when it comes to skin color. Okay. But here she tries to be polite with him. She doesn't want to hurt him. So she says, if I wasn't bound by my father's will, then for me, you are as fair as anyone else who I have looked on yet for my love. Okay, and Monaco says, for that also I thank you. And then he removes his sword, he removes his scimitar, and he says, I swear by the scimitar, which has killed the Persian king and the Persian prince, And these people, why killing them was important because these two people have won three fields, won three battles against Sultan Suleiman. Okay, so against, I swear by this scimitar which helped me kill these people, that for you, for your love, for you, Portia, I can do this, I can do this, I can do this, and I can do this. He quotes four things that he can do. Okay, so he says, I can outstare the sternest eyes, I can outbrave the heart most brave, but I can stare a person down. Okay, I can scare a person by staring at that person. I can scare the person who claims to be the bravest. I can pluck a cub from a bear when it's feeding on a bear, which is not a very wise thing to do. But he says, yeah, I can do this for you. And everybody in the court is like, whoa, whoa, mad. They go mad. And he's like, yeah, I can do this for you. And I can also mock a lion when a lion is hungry for prey. Okay, I can do all of this for you to show you how courageous I am. All right. But unfortunately, my courage has no role to play. On that same side, another important dialogue is he compares himself to Hercules, and he says, if Hercules and Lichess is Hercules' page, if a page is a servant, okay? अगर ये दोनों कभी एक dice का game खेलेंगे, they play a game of dice. The winning throw might come from the weaker hand. Weaker hand over here is Lichess, all right? And thus Hercules might lose, but he doesn't say the word Hercules. He says Alcides. Alcides is another name for Hercules, which over here is Morocco. So he compares his strength and his courage and his bravery to Hercules. He says, I'm as strong as Hercules, but unfortunately, another suitor who's like Lichess might win, might take you away because this gamble of caskets does not depend on my courage, but depends on the fortune. Okay, so blind fortune is leading me, third side. Blind fortune is leading me, hence I may lose. Portia said, देख रो मत. तेरे को लेना है तो ले, नहीं लेना तो घर जा भाई. And then she mentions the first condition of the casket, which we are already aware about because start of the act में ये जब पूरा मोचन में start होता है तभी हर teacher अपने को suspense तोड़ देता है कि if a person loses this gamble of caskets, they can't marry anyone, they have to leave the place immediately, and they can't tell anyone which casket they choose. I know someone already is thinking over here who's not seen my previous videos, but sir, what if he goes outside and marries someone? All right, so he can't do that because in Merchant of Venice, we are imagining that in this world, people once they take an oath, they stick by it. It's a fictional world. So यहाँ पे लोग मानते रहे कि promise का कोई मतलब होता है. Okay, so that's where Act 2 Scene 1 ends. It's just the entry of Morocco. We cut to Act 2 Scene 2, which is happening in Venice. This was happening in Belmont. Act 2 Scene 2 is happening in Venice. We are introduced to a character we've heard of before. This is Lancelot Gobbo. हमने इसके बारे में सुना था Act 1 Scene 3 में. Last side में Shylock is saying, I've left my house in the care of an unthrifty knave. This knave, the servant of Shylock, is Lancelot Gobbo. So when the play opens, the scene opens, Act 2 Scene 2, Lancelot is on stage and it's a soliloquy. He's talking to himself.
Okay, it's like the Tom and Jerry cartoon where you've seen that one episode in which Tom के यहाँ पे एक devil होता है और यहाँ पे एक angel होता है. Devil उसको कान में कुछ बोल रहा है, angel कुछ बोल रहा है और वो दोनों की सुनने की try कर रहा है, वो confused है. That same thing is happening in the first dialogue. Lancelot Gobo is trying to argue with his conscience. Okay, first he is very sure. The first dialogue is, "I'm sure my conscience will ask me to run." बट उल्टा होता है, उसका कॉन्शियंस जो उसका दिल है वो उसको बोलता है बी अ लॉयल सर्वेंट, यू नो, यू आर नॉट सपोज्ड टू रन अवे फ्रॉम शाइलॉक. बट जो फील्ड है, फील्ड इज द डेविल, द फील्ड इज एट माय एल्बो, डायलॉग दिखेगा तुम्हें, which means the fiend is on one end and he's asking me to not run. Okay, and my conscience is asking me, sorry, the fiend is asking me to run, conscience is asking me not to run. Run, don't run, run, don't run. Okay, so budge not, budge not. He's confused, like shh. Then he's trying to analyze. He's like, if I run, this happens. If I don't run, this happens. Moral of the story, he decides that he has to run. If he wants to survive, if he wants to stay sane, he has to get away from the devil over here is Shylock, and he has to run. So he's decided in his head. At the end of that dialogue, we realize that Lancelot has decided in his head that he wants to leave Shylock. All right. What question can come over here? What conflict is a certain character in when the scene opens? The certain character is Lancelot. Conflict is whether he should run or not. Okay, and what does he decide? That's the only question that can come from this one long dialogue, which extends 1.5 sides. At the end of the second side, we are introduced to Lancelot's father. He enters. He's half blind. Lancelot decides to play a prank on him. Okay, because the father can see that someone is there, but he doesn't know who this person is. So the father comes. He's like, "Arey bhai sahab, can you help me? Where does a Jew stay?" He says, "Why are you looking for this Jew? Jew over here is assumed that it's Shylock. वो गली में एक ही बंगलो है, वो Shylock का बंगलो है." He's like, "Where does the Jew stay?" He says, "I'm looking for my boy Lancelot who works for him." He's like, "Oh हो, आप मास्टर Lancelot की बात करो." He's like, "अरे सर, कुछ गलतफहमी हुआ है." Father बोलता है कि he's not some master वास्टर, some चिंदी सा लड़का है, वो मेरा छोकरा है, मेरा बेटा है, मेरे को वो ढूंढ रहा हूँ मैं उसको. नहीं नहीं नहीं, आप मास्टर लॉन्सलॉट की बात करो, ऐसे मत बोलो उनके बारे में. अरे सर, कोई मास्टर वास्टर नहीं है, आपके लिए मास्टर होगा, मेरे लिए एक छोटा सा चिंदी सा छोकरा है वो. नहीं नहीं नहीं, मास्टर लॉन्सलॉट की बात मत करो. लॉन्सलॉट इज सेइंग दिस. ही सेज मास्टर लॉन्सलॉट इज अनफॉर्चुनेटली डेड. ये पूरा डायलॉग थर्ड साइड पे हो रहा है. फोर्थ साइड पे द फादर इज अ बिट शॉक्ड. ही लाइक, क्या बोल रहा है तू, मेरा बेटा मर गया, व्हाट विल आई डू विदाउट हिम एंड स्टफ. एंड लॉन्सलॉट इज लाइक, व्हाट एन इडियट माय डैड इज, यू नो, लाइक it's a wise father who knows his own son. It's a malaprop. So in this scene, we are introduced to Lancelot. This character of Lancelot uses a lot of malaprops. Malapropism is when you want to say something, but you say the inverse of it. Like you don't know how to use the words correctly. Okay. And he does it deliberately because even when he is saying it incorrectly, it has a comical effect. All right. So here, the original saying is a wise son knows his own father, but Lancelot inverses it. He says it's a wise father who knows his own son. And then Lancelot said, "Don't you recognize me?" And the father like, "No, I can't recognize you. I'm half blind." He's like, "You know, even if you weren't blind, you wouldn't have recognized me because you're a useless bapu." He says, "Arey, no, I really don't recognize you." He's like, "Dude, I am your son." Okay, enough jokes. Like, no, I can't believe it. He's like, "I don't care what you believe or not. I am your son." Okay, he says, no, I still can't believe you just said my son is dead. How can you be my son? He says, "No, Baba, I am your son. Your wife Marjorie is my mom, Baba." वो बोलते, "Oh, हो. इसको पता है मेरी वाइफ का नाम माजरी है. दैट मीन्स यू आर माई सन." He says, "Yes, I am your son." Okay, ये पूरा ड्रामा 4 साइड्स तक चल रहा है. So fourth side के end में they are both convinced that they meet each other, and he's like, "What have you got with you?" So Lancelot Gobo, that's the father, he's got a dish of doves. Doves is kabutar meat. Okay, I know it's doesn't sound very nice, but people used to eat it back in the day. So he's got this as a present for Shylock because servant hai or Shylock master hai, so as a token of appreciation. He says, "Arey, if you want to give a gift to Shylock, give him a halter. Halter is a rope to hang himself. You know, don't give him all this. You know, this you should give to Bassanio instead, with whom I want to work." And that's when someone enters the scene. That's Bassanio. So who enters the scene at this point? They'll ask you. Bassanio enters. He's surrounded by a group of servants. He's giving instructions to them. उसकी पैकिंग चल रही है. वो बेलमोंट जा रहा, पैसे अप्रूव हो गए. शायलॉक ने उसको पैसे दे दिए. So वो पार्टी बाटी थ्रो करने वाला है. It's Bassanio. तो वो चिल्ड लाइफ में, उसको पैसे मिल गए. थोड़े पैसे से उसने कपड़े खरीदे, गिफ्ट्स खरीद रहा है. अपने सारे सर्वेंट्स को कॉस्ट्यूम्स पहनाएगा, एक ऐसा एक लोगो के साथ. बसानियो सर्वेंट, बसानियो क्रू. मजाक कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ तो रहेगा उसका फुल entourage. Okay, and he's giving instructions to his servants. That's when Lancelot go by and Lancelot go to him and say, "Sir." And then next two sides useless है, कोई question इसमें से नहीं आएगा, because both of these people are trying to speak at the same time, and Bassanio is looking at one, looking at the other, looking at one, looking at the other. Like, "Sir, मुझे कुछ बोलना, but मेरा डैड आपको बोलेगा." "हाँ सर, मैं बोलेंगे ट्राई कर रहा हूँ, पर मेरा बेटा आपको बोलेगा." "हाँ सर, मैं वही बोल रहा था कि मैं जो डैड आपको बोलने वाले हैं, हाँ यही सर मेरा बेटा बोल रहा है." Bassanio is like, "Shh, one speak for both." एक जन बोलो. And बोलता है, "Sir, I want to serve you." Bassanio बोलता है, "हाँ तेरे बारे में मैंने सुना हुआ है. Your sir, this is the sixth side, I'm guessing. Okay, so left side पे आएगा. यहाँ पे Bassanio बोलता है, "हाँ, your master has spoken about you. Okay, but are you sure you want to work with me, because Shylock is a rich guy and I'm not very rich." So यहाँ पे एक famous quote ये बंदा crack करता है Lancelot. यहाँ पे वो बोलता है, "Sir, the grace of God is rare enough.
and it's an old proverb. So he says the grace of God is gear enough is well split between you both. My master has gear enough. Gear enough is enough resources. He has money, but you have the grace of God. You have the blessings of God. So I choose to be with you. बस मैंने बोलता फाइन जा अपने मास्टर को बाय बोल के आ और तू मेरे साथ काम कर सकता है. यहाँ पे एक डायलॉग आता है जो लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है. सेवन साइड फर्स्ट एक डायलॉग है बड़ा सा. वे लॉन्स नॉनसेंस बात कर रहा है. वो बोलता है लुक एट माय palm. Here you can see a long line of life. Here you can see a good number of wives. I'm getting married so many times. Oh, these many wives I'm going to marry with. And oh, I won't die thrice. Thrice I'll escape drowning. But the danger of my life depends on if I roll off a feather bed. Okay, which simply means that if I get caught having an affair with someone, the husband of that wife will kill me. Okay, but you can't write this in ICSE because ICSE is sanskari. So यहाँ पे एग्जाम में वो लोग मीनिंग ही नहीं पूछेंगे, ये डायलॉग ही नहीं पूछेंगे. अगर ये डायलॉग आता भी है, they'll simply ask you to quote what Lancelot says before exiting. So you just have to quote the points over there. All right? इसके बाद Lancelot exits. अब बसानियो लियोनार्डो इज अ सर्वेंट ऑफ हिज, ऐसे ही कटप्पा टाइप है, उसको एक इंस्ट्रक्शन देता है. लियोनार्डो वहां से एग्जिट कर रहा है, ग्राशियानो एंट्री मारता है. दिस इज द लास्ट साइड ऑफ एक्ट 2 सीन 2. ग्राशियानो एंटर करता है, लियोनार्डो को पूछता है भाई बसानियो कहाँ, बोलता है इधर ही है. बसानियो को हाई बोलता है, ग्राशियानो बोलता है ग्राशियानो क्या चाहिए तेरे को, बोलता है आई वांट टू कम विद यू टू बेलमोंट. वो बोलता है ठीक है तू आ सकता है, बट डूड इफ यू कम टू बेलमोंट विद मी यू हैव टू बिहेव प्रॉपर्ली, बिकॉज देख यहाँ पे तेरी हरकत हमें बहुत पसंद है, वी लव यू द वे यू आर, बट ओवर देयर समवन हु इज नैरो माइंडेड विल नॉट गेट योर जोक्स, दे माइट बी ऑफेंडेड और फिर मेरा शादी का चांस टूट जाएगा. सो प्लीज मेरे को वहां पे एक अच्छी इंप्रेशन बनानी है, तो तू अपने आप को बिहेव करेगा, प्रॉमिस कर रहा है. Last side of Act 2 Scene 2 is a long dialogue by Graciano where he's promising Bassanio to maintain himself, to behave himself. Okay, so it's a set of rules that he promises to follow. All right, that's where Scene 2 ends. Act 2 Scene 3 छोटू सा एक साइड का सीन है जहाँ पे Lancelot is at Shylock's house. He's saying goodbye to Jessica. There's a new character we introduced to. She's the daughter of Shylock. She's in love with Lorenzo, who's a Christian and also a friend of Bassanio. Okay, it's like Romeo and Juliet. दो opposite clans है. Okay, they Jews and Christians, and one Jew का जो बेटी है Jessica, she loves Lorenzo, and obviously she's nothing like Shylock. Okay, and Lancelot has a good relation with her, even though he's a servant. They both share a good camaraderie. They both are friends. So he's saying goodbye to her. She calls him a merry devil, which is an important part of this scene. Okay, and she says that I'm gonna miss you. And here's a ducat. उसको एक पैसा ducat देती है, gold coin देती है, बोलती है I want you to give this letter to Lorenzo because you're going to meet him soon. So he's your new master's friend. Give him this letter. बोलता है I'll do it. Okay, वो निकलता है वहां से. And एक डायलॉग लास्ट का, वो सीन 3 का एक डायलॉग है where we come to know Jessica's true intentions about her father. She's ashamed to be her father's daughter. She's like, if Lorenzo keeps his promise to come and fetch me, they both have decided to run and get married, elope and get married. And if he keeps his promise, then I will no longer be Shylock's daughter. I'm ready to run away from him. So she's ready to betray her own father. The difference between Portia and Jessica. Portia is also unhappy with her father, but she doesn't decide to break the rule that her father has set for her. Whereas Jessica is a forward-minded person. She decides to not stick around with her father and instead go with the love of her life. Scene 4, we are introduced to Lorenzo. At the start of the scene, he's already convincing his friends कि वो लोग एक प्लान बना रहे हैं कि हम लोग ऐसे भगाएंगे इसको. So Bassanio, प्लान ये है, बहुत सिंपल सा प्लान है. Bassanio is throwing a party before going. Obviously अपने इन्वेस्टर को इनवाइट करेगा, दैट Shylock, बिकॉज Shylock का ही पैसा है. तो Shylock भी खाना खाने आएगा बिकॉज उसको अपना खुद का पैसा उड़ाना है. तो जब Shylock फीस्ट में आएगा तब अपन लोग फीस्ट से कल्टी लेंगे एंड वील गो एंड fetch Jessica and come. तो कोई अपने को देखा नहीं and we'll be in disguise. They pretend to organize a masquerade. Venice is famous for masquerades. Masquerades is a masked party. So they are all masked and, they are led by a torchbearer and they are traveling through the streets of Venice. There's music, there's drums. So Christians do this a lot. It's like a carnival, a small carnival procession. Like अपना विसर्जन प्रोसेशन. ओके, सो गली गली में शोर होता है, वैसे भी वो लोग भी करते हैं. सो बोला अगर हम लोग ने सब लोग ने मास्क पहना होगा तो कोई अपने को पहचान नहीं पाएगा. उसके फ्रेंड्स आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस प्लान. दे आर लाइक तू पगला गया है डूड, हम लोग कपड़े खड़े करने नहीं यार, हम लोग लड़कियों को उठाने जा रहे हैं. ओके, इट्स अ टास्क, वी कांट जस्ट डू इट. ही सेज नो वील डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट. उतनी देर में लॉन्सलॉट लेटर लेके आता है. वो लेटर पढ़ता है, रोमांटिक मोमेंट वहां पे होता है. उसको पता चलता है लेटर के थ्रू कि जेसिका ने बोला है कि मैं भागने के लिए तैयार हूं. अब ही इज डिसाइडेड, ही लाइक चाहे तुम लोग मेरा साथ दो या ना दो, मैं ये करने वाला हूं. क्या तुम मेरे साथ हो? उसके फ्रेंड्स बोलते हैं ऑफ कोर्स हम तेरे साथ हैं, हम तेरे को ऐसे नहीं छोड़ेंगे. सीन 4 के एंड में डिसाइड होता है कि लॉन्सलॉट हैज डिसाइडेड, लोरेंजो हैज डिसाइडेड टू रन अवे. लॉन्सलॉट बोलता है उसको, सर आई एम गोइंग बैक टू शाइलॉक्स हाउस बिकॉज आई हैव टू इनवाइट शाइलॉक टू द फीस्ट. बसानियो ने मुझे काम दिया है टू इनवाइट माय ओल्ड मास्टर टू फीस्ट विद माय न्यू मास्टर. बोलता अगर तू शाइलॉक के घर जा रहा है तो प्लीज एक फेवर कर ले, प्लीज जेसिका को सिर्फ इतना बोलना कि आई एम गोइंग टू हेल्प हर, आई विल नॉट फेल हर, मैं उसको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा. बोलता है डन सर. उसको भी एक डकेट मिलता है, वो ऑफ कोर्स कमीशन खा रहा है यहाँ पे. लॉन्सलॉट वहां से चले जाता है. लोरेंजो ने डिसाइड कर लिया कि वो रन करेगा. एट द एंड ऑफ दैट सीन वी सी अ लेटर
so we read the contents of Jessica's letter, which is important. They'll ask you in the exam, what has Jessica written in the letter? 3 points है, वो 3 points पढ़ता है ग्रेशियानो के लिए, ठीक है? वहां पे सीन एंड होता है. We are on Act 2 Scene 5 now. Act 2 Scene 5 में स्टार्टिंग में लॉन्सलॉट शाइलॉक की सुन रहा है, शाइलॉक चिल्ला रहा है उसके ऊपर, लॉन्सलॉट बस वहां खड़े खड़े उसको सुन रहा है. शाइलॉक का ईगो हर्ट है. तुम्हारी मॉम के घर से अगर कोई काम वाली बाई छोड़ के जाएगी और सामने वाले के घर में काम कर रही है, बट तुम्हारे घर पे काम नहीं कर रही है, तो जब जब तुम्हारी मॉम वो काम वाली को लिफ्ट में मिलेगी, तो तेरी मॉम हमेशा वो काम वाली को टॉन्ट मारेगी, बोलेगी हाँ हाँ देख लिया क्या हो रहा है वहां पे तू चम्मच मम्मच नहीं चुरा सकती ना, हमारे यहाँ तो बहुत चोरी करती थी, और ये क्या देख रही है वहां पे, अच्छा तेरे को ऐसे यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है वहां पे, अच्छा ये लोग कोट पहनाते हैं, हमारे यहाँ तो तू कुछ भी पहन के आ जाती थी. तो ऐसे मॉम टॉन्ट मारेगी काम वाली को, बिकॉज मॉम का ईगो हर्ट है. यहाँ भी सेम चीज हो रही है. ओके, शाइलॉक का ईगो हर्ट है, तो बोल रहा है देख लिया तू क्या कर लेगा, बसाने के बाद देखता हूँ कितनी देर सर्वाइव करेगा तू. लॉन्सलॉट सुन रहा है. उतनी देर में जेसिका आती है, और जेसिका को लॉन्सलॉट सुमड़ी में ऐसे बोलता है कि तेरा छावा आके तेरे को लेके जाएगा पक्का, ओके. और वो बोलता है क्या बात कर रहा है तू मेरी बेटी के साथ, बोलता है कुछ नहीं सर मैं सिर्फ भाई बोल रहा था, बोलता है ठीक है. In that whole scene, what's important is Shylock's debate in his head. He's wondering, why is this guy calling me? It's definitely not out of love. ये बसानी जो बुला रहा है वो लव नहीं कर रहा, वो फ्लैटर कर रहा है. शाइलॉक का ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, वो बोल रहा है मैंने उसको पैसे दिए तो ऑब्वियसली मुझे खुश करने की ट्राई करा, बट मैं जाऊंगा बिकॉज मेरे पैसों के समोसे हैं, मैं तो खा के आऊंगा. ओके, सो ही इज डिसाइडेड इन हिज हेड दैट ही इज गोइंग टू गो एंड ही इज गोइंग टू go to the feast. And at the end of the scene, we again see a soliloquy by Jessica, where she's saying that, if everything goes well according to the plan, then you will lose a daughter and I'll lose a father tonight. Okay, I'll a father and you a daughter will lose. इतना dialogue वहां पे आता है. That is Act 2 Scene 5 ending. Okay, Act 2 Scene 6. लोरेंजो के दोस्त जेसिका के बालकनी के नीचे पहुंच चुके हैं, बट लोरेंजो जो मेन हीरो है वो आया नहीं अभी तक. ओके, सो वहां पे ग्राशियानो एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग बोलता है ऑन सेकंड साइड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ही साइट्स 3 एग्जांपल्स which show human nature. Human nature is that, everything in life is important to us until we are chasing it. But once we get that thing, we stop valuing it. Okay? ये लाइफ का उसूल है. जब तक हमारे पास कोई चीज होती नहीं, हम उसको चेज करेंगे डेस्परेटली, हम कुछ भी करने के लिए रेडी है. बट once we attain it, we don't value it. क्या रेफरेंस है यहाँ पे? अगर तुम सोचो सर लॉजिक क्या था इसका, लॉजिक ये है कि जब तक जेसिका अग्री नहीं हुई थी भागने के लिए, तब तक लोरेंजो उसके प्यार में पागल था. अब जब जेसिका ने हाँ बोल दिया, तो लोरेंजो को टाइम पे होना चाहिए, टाइम से पहले होना चाहिए, बट लोरेंजो खुद लेट है. इट्स अ टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड, ऐसा ग्राशियानो बोल रहा है. लोरेंजो आता है, सॉरी बोलता है सॉरी माई, वी डोंट नो व्हाई इज लेट, वो कभी पता नहीं चलता, बट वो आके सॉरी बोलता है. ठीक है, उतनी देर में वो आवाज देता है, ओए ये छोकरी आ रही है क्या नीचे. वहां पे जेसिका बालकनी में आती है, शी इज डिस्गाइज्ड एज अ बॉय. ओके, सो दैट्स द प्लान. शी इज गोइंग टू ड्रेस अप लाइक अ पेज. शी इज अशेम्ड ऑफ व्हाट शी इज वेयरिंग. ही सेज कम ऑन, यू विल बी माय टॉर्च बेयरर. एंड जेसिका बोलती है व्हाट, आई एम गोइंग टू होल्ड अ टॉर्च, आई एम ट्राइंग टू हाइड माई सेल्फ. बोल रहा है हाँ बट मैंने सब सोचा हुआ है. सो दैट्स द प्लान. वो लोग उतना प्लान डिसाइड कर रहे हैं, और वो लोग सब भाग रहे होते हैं. सो स्टेज से एग्जिट कर रहे होते हैं, तब स्टेज पे एंटोनियो एंटर होता है. एक्चुअली इट्स अ स्ट्रीट. सो एंटोनियो एंटर करता है, अंधेरे में कुछ लोगों देखता है, बोलता है अबे कौन है वहां पे. तो ग्राशियानो बोलता है अरे एंटोनियो आप. बोलता है हाँ अबे चल जल्दी, बसानियो अब भी निकल रहा है. बोलता है बट मैस्करेड वगैरह जो चल रहा था, पार्टी वगैरह, कुल्फी बुल्फी तो खाया नहीं हम लोग. बोला भाई सब कैंसिल्ड है, द विंड इज फेवरेबल राइट नाउ, सो बसानियो शिप इज लीविंग. ग्राशियानो बोलता है चल आई एम तो हैप्पी, मेरे को बेलमोंट जाने मिल रहा है, मेरे को वेकेशन मिलेगा, आई एम गोइंग. सो वो सीन के एंड में हमें पता चलता है कि जो मैस्करेड होने वाला था वो होता नहीं है. अब ये लोग भगा चुके हैं. सो couple of things have happened so far. We are introduced to Morocco. We are introduced to Lancelot. Lancelot has left Shylock. Lancelot has joined Bassanio. Jessica is introduced, who is Shylock's daughter. She's in love with Lorenzo. Lorenzo is in love with Jessica. Both of them have decided to elope. Shylock has decided to go to the feast that Bassanio is organizing. Both of them have eloped, and obviously वहां पे cut to Bassanio has left for Belmont. इतनी चीजें सीन 6 तक हुई है. सीन 7 is back in Belmont. जो मोरक्को इंट्रोड्यूस हुआ था, वो अभी कैस्केट चूज करने के लिए रेडी है, एंड ही एनालाइजेस द कैस्केट्स. वेरी क्लासी डायलॉग्स, ब्यूटीफुल डायलॉग्स इन दैट सीन. ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन. ऑब्वियसली आई कांट एक्सप्लेन इट राइट नाउ बिकॉज आई हैव टू गो डायलॉग वाइज. ओके, सो बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज द वे ही चूजेस द कैस्केट. शेक्सपियर हैज डिस्क्राइब्ड इट सो नाइसली कि अगर तुम्हें नहीं पता होता कि लेड कैस्केट में पोर्शिया का पोर्ट्रेट है एज अ स्टूडेंट, तो इट्स सो कन्विंसिंग द वे मोरक्को इज एनालाइजिंग द कैस्केट. हमें लगता है कि हाँ यार इसका एनालिसिस करेक्ट है. जिस लॉजिक से वो गोल्ड कैस्केट को अप्रोच करा, दैट लॉजिक इज परफेक्ट. ओके, सो ही डिसाइड्स टू सिलेक्ट द गोल्ड कैस्केट. इस सीन में एक अड़ियल सा डायलॉग आता है, विच कैस्केट इज मोरक्को ऑलमोस्ट गोइंग टू चूज, बिकॉज वो ऑलमोस्ट सिल्वर कैस्केट चूज करने वाला होता है, बट एंड में वो एक और बार गोल्ड कैस्केट का इंस्क्रिप्शन पढ़ता है, एंड ही बिकम्स कन्विंस्ड दैट इट्स अ गोल्ड कैस्केट. व्हाट्स एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द सीन? 2-3 things. One, that it's the first time someone is choosing the casket. Okay, in this entire play, there are only 3 people who choose the casket: Morocco, Aragon, and Bassanio.
इससे पहले जितने वो 6 shooters mentioned थे, they never even reach the casket. वो लोग condition सुन के ही भाग जाता है. Okay. Also, so this is the first time someone is choosing a casket. The second important thing about this scene is the inscriptions on the casket. Okay. All three inscriptions are to be rote learned. You have to know कि कौन से casket पे क्या inscription है. You have to quote it the way it's given. Also, what's important is what's written in the scroll. जब वो खोलता है, उसको अंदर क्या मिलता है? That's a very important thing because अंदर obviously Portia का portrait नहीं है. So he finds something inside. So what does he find? A carrion death is a skull with a scroll in its socket. Okay, और scroll में क्या लिखा होता है? तो scroll के contents भी important है. These are the important elements of scene 7. Scene 7 100% important है हर school exam के लिए, हर board exams के लिए. Okay, scene 8 is a छोटू सा scene. इसमें दो characters है, Salino and Selene, who are giving us a background about what all has happened. Okay, इतनी देर में क्या क्या हो चुका है. So through dialogues we come to know that Shylock came to know about Jessica's elopement. He's devastated. He goes and appeals to the Duke, who is the judge of Venice, the sheriff of Venice. उसके आगे complain करता बोलता है मैं तो Bassanio का ship search करना, but Bassanio's ship has already set sail, तो ship search नहीं कर सकता है. वहां पे कोई उसको बोलता है कि यार वो लोग ship में नहीं है, because वो लोग को एक अलग gondola में देखा था. Gondola is like those long boats. Okay, तो कोई उसको information देता था. ये दोनों को ये लोग दिखे थे गोंडोला में. और एंटोनियो भी अश्योर करता है ड्यूक को कि मैं आपको श्योरिटी देता हूं वो बेसानियो के साथ नहीं है. शार्लॉक इज एंग्री, ओके, नॉट ओनली एट हिज ओन डॉटर बट आल्सो एट क्रिश्चियंस. ओके, बिकॉज ये क्रिश्चियन था जो उसकी बेटी को भगा के लेके गया था ना. द ओनली क्रिश्चियन जिसके अगेंस्ट वो रिवेंज ले सकता है इज एंटोनियो. इसलिए ये जो तो कैरेक्टर्स है बोलते हैं एंटोनियो हैज टू बी वेरी केयरफुल नाउ बिकॉज शार्लॉक अपना सारा गुस्सा एंटोनियो पे उतारेगा. ओके, एंड they tell us the audience about how they've heard a rumor that Antonio might have lost a ship. Okay, they're not very sure, it's a rumor. Okay, so they mention, and this is the first time in the scene we come to know that Antonio might have lost a ship. Okay, scene 9, we are introduced to a new character for the first and the last time. This is Prince of Aragon. He's come, as the name suggests, Aragon, he's also arrogant. Also, this guy is on the older side, so he's white-haired. The character in the scene, originally when Shakespeare had designed the play, he had envisioned this guy to be white-haired. इसलिए काफी references are with silver hair. इसलिए वो silver casket choose करता है. The casket by itself and this person have a lot of similarities. तो ये वो scene में पता चलता हमें. Again, once again, it's a scene that's so long and has so many intricacies that I can't explain dialogue by dialogue to you right now. I can only give you a summary and I can tell you that it's a very important scene. जहाँ भी casket choose हो रहा है, those are important scenes. ठीक है, Act 2 scene 9 is the last scene of Act 2 and there we are. I tried to do the whole act. This is the best I can do. इसके अलावा I'm teaching it line wise obviously on Zoom. But मैं और कुछ हेल्प नहीं कर सकता. जिनको लग रहा है सर आप और वीडियोस क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो, एक सिंपल तुम्हें मेरी लाइफ का एक टाइम टेबल बता रहा हूँ. आई वेक अप इन द मॉर्निंग, देन आई हैव माय ब्रांड टू हैंडल. आई रन कोचिंग क्लासेस, ऑब्वियसली आई हैव अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, सो आई एम बिजी विद दैट. 1 o'clock के बाद मेरे लेक्चर स्टार्ट होता है टिल 9 o'clock. सो जब मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा था कोविड के वक्त, दैट टाइम लेक्चर्स नहीं होते थे, इसलिए मैं आई वाज जस्ट रिकॉर्डिंग एज मच एज आई कुड. अभी मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ ऑल्सो, सो दैट्स द ओनली थिंग. आई एम नॉट ट्राइंग टू नॉट गिव यू गाइज what you need, okay, but I'll try and jaja time milega, I'll try and do it as much as I can. If you're following me on Instagram also, I keep putting up these ask me anything sessions, so this is for people who not enrolled with me. तुमको कोई भी डाउट है, we can have a live session and you guys can ask me doubts, okay. अगर तुम पहली बार मेरा ये चैनल देख रहे हो तो प्लीज एज यूजुअल जो सब लोग बोलते हैं वीडियोस पे, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, and I don't know how this works, but it's gonna help me eventually, okay? If you liked it, also tell me how you found it, because you know you work hard for it, you want someone to appreciate it. It always feels nice when people say kind words, okay? I love you guys. Take care. I hope it really helped. If you feel someone else is going to benefit from it, please let them also know about it, all right? Take care, stay safe, all right, and wear a mask, and love you. Bye.